Bismillah Rahman. In continuation of previous lecture number 1, where we completed 3 steps for isolation of bacteria from soil, and we completed uh, media preparation, autoclaving, and plate pouring steps during previous lecture 1. When the TSA media poured in the petri plates, the petri plates should be placed in one side under the clean bank, and more better if these petri plates should be these petri plates must covered with a lid, and it is more better if these petri plates may be sealed with by using parafilm. Parafilm is a type of tape. This parafilm tape. After petri plates pouring, the next step is the dilution. Here you can see in this schematic diagram, here you can see these are the test tubes. Usually 5 to 7 dilutions are used for isolation of bacteria from soil, rhizospheric soil, or from other environmental sample. As I discussed earlier, PBS, phosphate buffer saline solution, is recommended for isolation of bacteria from soil. If PBS is not available, you may use sterile water or any other saline solution. Always used 1x PBS. This x is the concentration. Usually 10x PBS is available in the market. So for isolation purposes, for dilution, in the dilution purposes, use 1x PBS. Take 5 test tubes and under clean bench, put 10 ml PBS in test tube number 1. 5 टेस्ट ट्यूब देनी है, उन सबको बेटर पहले नंबर कर लें. टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. हर टेस्ट ट्यूब में 10 ml PBS सोल्यूशन, 1x कंसनट्रेशन का PBS सोल्यूशन ऐड कर दें. ऐड 10 ml PBS सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब्स. पांचों टेस्ट ट्यूब्स को क्लीन बेंच के अंदर लैमिनर फ्लोर में 10 ml PBS solution ऐड कर देना है. The next step, here you can see this is the roots, soil adhering with roots. This is groundnut roots. You can also see the pods and the soil. This is a rhizospheric soil. The soil around the roots is called rhizospheric soil. Rhizospheric soil or simple soil. Take or weigh 1 gram of soil and add in test tube number 1 containing 10 ml PBS solution. 1 ग्राम सॉइल लेनी है और उसको हमने टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में ऐड कर देना है. इस टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी 10 ml PBS solution मौजूद है. Mix this test tube number 1 thoroughly. Mix it well by using vortex mixer, and after complete mixing, and for dilution purpose, now again take 1 ml pipette 1 ml. Take 1 ml or by using micro pipette 1 ml solution from this test tube number 1 containing 10 ml PBS as well as 1 gram of the soil. टेस्ट ट्यूब नंबर 1 जिसके अंदर
10 ml PBS सोल्यूशन सिलाइन सोल्यूशन था और उसके अंदर 1 ग्राम सॉयल को मिक्स किया गया था। वो जो मडी सा मटेरियल प्रिपेयर हो गया है, उस मडी मटेरियल सोल्यूशन के अंदर से 1 ml हम लोगों ने पाइपट करना है और उसको टेस्ट ट्यूब नंबर 2 के अंदर ऐड कर देना है। Pipette from test tube number 1 and add it into test tube number 2 and similarly mix the test tube number 2 thoroughly by using the water mixer. After thoroughly mixed, again take 1 ml from this test tube number 2 by using pipette 1 ml and pour it into the test tube number 3. Mix it well. And so on up to test tube number 5. टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में जिसमें इन पांचों टेस्ट ट्यूब में 10 ml PBS सोल्यूशन मौजूद था। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में 1 ग्राम हमने सॉइल डाली, मिक्स किया, वॉर्टेक्स किया, वहाँ से 1 ml डाइल्यूशन पर टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में डाला, उसको मिक्स किया, वहाँ से जो रेल्टी सोल्यूशन था, मडी सोल्यूशन था, उसको हमने टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में फिर उसको मिक्स किया, फिर वहाँ से 1 ml 4 में फिर उसको मिक्स किया, फिर वहाँ से 1 ml 5 में और उसको मिक्स किया। इस तरीके से हमने 5 डाइल्यूशन तैयार कर लिए। नाउ टेक 200 माइक्रोलीटर जो हमारे पास माइक्रो पाइपेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए 200 नॉट ml बट माइक्रोलीटर हमने सोल्यूशन लेना है फ्रॉम ईच टेस्ट ट्यूब एंड पोर इन द इंडिविजुअल पेट्री प्लेट्स। उस हर एक को इसमें से 200 ml लेना है और उसको इस एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पोर कर देना है, ऐड कर देना है। सिमिलरली सेकंड से लेकर एक सेकंड टेस्ट ट्यूब लेकर एक सेकंड पेट्री प्लेट के अंदर उसको पोर कर देना है, ऐड कर देना है। थर्ड को एक थर्ड पेट्री प्लेट के अंदर, फोर्थ वन को फोर्थ में और फिफ्थ टेस्ट ट्यूब को हमने 200 माइक्रोलीटर लेकर उसको हमने फिफ्थ टेस्ट पेट्री प्लेट के अंदर कंटेनिंग मीडिया ऑलरेडी स्टेप 3 में जो हमने पेट्री प्लेट्स बनाई थी TSA मीडिया की, उस पर हमने 200 ml इसको पोर कर देना है। पुट दीज पेट्री प्लेट्स इन रोटेटिंग टेबल, एक छोटा सा टेबल होता है जो कि रोटेट करता है, एंड बाय यूजिंग द स्प्रेडर, एक स्प्रेडर यूज करके स्प्रेड द बैक्टीरियल सोल्यूशन। ये जो इसके अंदर से हमने 200 ml लेकर इसमें है, उसको हमने टर्न टेबल में डाल के बाय यूजिंग द स्प्रेडर इसमें कम्प्लीटली स्प्रेड कर देना है। सिमिलरली इन तमाम पेट्री प्लेट्स में हमने बाय यूजिंग द टर्न टेबल एंड स्प्रेडर all the bacterial solution in spread the bacterial solution in petri plates and allowed to settle or dry these petri plates under clean bench। clean bench के अंदर इन petri plates को थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रखना है। Then these petri plates should be covered with a lid and sealed each petri plates and sealed इनके ऊपर कवर चढ़ाकर sealed each petri plates with the help of parafilm। parafilm is a type of tape, and placed these petri plates in incubator at 28 degrees Celsius for at least 2 days। इन पेट्री प्लेट्स को इंक्यूबेटर के अंदर रख देना है 2 days। आफ्टर 2 days ऑब्जर्व बैक्टीरियल ग्रोथ। इंक्यूबेटर के अंदर 2 दिन के बाद या 72 आवर के बाद इन पेट्री प्लेट के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ देखनी है। आफ्टर 2 days you will observe many colonies of soil bacteria in these plates। You will see many colonies like
These are different 1, 2, 3, 4 colonies. These are many colonies. These are many colonies, more and more. And you will observe very dense bacterial culture or more colonies, unpaired colonies, purified colonies in plate 1, similarly 2 and 3, and in Petri plate in dilution 4 and 5 you will see less bacterial culture. So this is now your bacteria is isolated from the soil. Up till this step, we successfully isolate bacteria from soil sample. The same step is used for isolation of bacteria from water, from compost, from any other environmental sample. After isolation, the next step will be the screening or purification, because in these Petri plates you can observe different colonies with different colors and different sizes. So these different sizes, different shapes, different colors, these will indicate different bacteria present in that soil sample. So we will purify and screen. And during next lecture number 3, I will discuss the purification, how to purify each and individual bacterial colony from these plates. So by summarizing this whole lecture number 1 and number 2, once again I'm repeating that you use dilution plate technique. This is called dilution plate technique. This dilution plate technique is used for isolation of bacteria from soil, from simple soil, from rhizospheric soil, or from compost, etc. So we need specific media and triptych. There are many type of media, but triptych TSA, triptych soil agar is a universal media, and it is to be believed that different kind of soil bacteria can easily be cultured, can easily be grown on this TSA media. So by saline solution or buffer saline solution, we can make dilution, and then pour the sample into this in the previous solution, and after mixing, then pour that sample into the prepared media plates, and these plates, the next for growth would be incubated in incubator, and the temperature of the incubator should be set at 28 degrees centigrade, and after at least 72 hours you will observe many colonies grown on these Petri plates, and these colonies have different shapes, different colors, different sizes. So these different shape, size and color indicate many different bacteria. After incubation, place these Petri plates in cold cabinet. Under cold cabinet at 4 degrees Celsius, this culture will preserve for longer period of time, and this culture
we will use for further experimentation, further purification, further screening, further plant growth promoting traits, agronomic traits, or further molecular studies. The isolation of bacteria from soil is completed here. The next lecture will be about purification screening. Thank you.